तो लास्ट क्लास में हमने हमने जो है रिजल्ट्स ऑन अ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा था। उसमें हमने ढेर सारे रिजल्ट्स लिखे थे। आज हम लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम हम जब रैंक की बात करते हैं तो जब किसी मैट्रिक्स से रैंक निकालते हैं तो उसमें कहते हैं कि इतने जितनी रैंक है उतने उसके अंदर उतने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज होंगे, या इंडिपेंडेंट हमारे पास कॉलम्स होंगे। तो लिनियरली इंडिपेंडेंस और लिनियरली डिपेंडेंस का मीनिंग क्या होता है, एंड देन वी कैन एबल टू से about that. Okay, so let's define first linearly dependent vectors, या rows या फिर columns. So let's define first linearly dependent vectors. Okay, so so if we write um, the sum of the vectors with scalar multiple is equal to 0, but all the scalars is not equal to 0. It means at least one scalar is there is non-zero. So we can write here the vectors v1, v2 up to vn are said to be linearly dependent if there exist scalars a1, a2 up to an, and we can say not all zero, such that this is a1 v1 plus a2 v2 up to your an vn is just equal to 0. मतलब if you are not taking all the scalars is 0, and the linear combination is becomes 0, then we can say the v1 v2 and vn vectors are linearly dependent. Or we can say in this way, some finite vectors are said to be linearly dependent if their linear combination can be made 0 without taking all the scalars 0. और वही हमारे पास वेक्टर्स लिनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे, कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो रहा है तो डिफरेंटली वी विल हैव टू टेक ऑल द स्केलर्स इक्वल टू 0. Okay, so let's define the linearly independent vectors. Linearly independent vectors.
So if they are not LD, linearly dependent, then they will be called linearly independent. Vectors which are LD. LI, इसको दूसरे वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो है तो डेफिनेटली ऑल द स्केलर्स विल बी जीरो. You can say in this way, the vectors v1, v2 up to vn are called linearly independent if whenever this linear combination is zero, this a1 v1 plus a2 v2 up to the total plus a n vn just equal to 0 for some scalars. This is your AIs. Then all the scalars will be equal to 0. So the only way to make the linear combination equal to 0 if you are taking all the scalars equal to 0. You can also write in this way. So some finite vectors are set to Li linearly independent if the only way to make their linear combination zero is to take all scalars 0. ओके. अगर हम इनफाइनाइट सेट के एल आई और एल डी होने की बात करते हैं, ठीक है, सो वी कैन से कि वी आर टेकिंग चूजिंग एनी ऑफ द finite number of vectors from an infinite set and that should be linearly independent, then we can say that infinite set is also linearly independent. So we can define a simple definition. So you can have an infinite subset of V with a in vector space is said to be linearly independent if every finite subset of S is linearly independent. Otherwise,
It is linearly dependent. इट इज लीनियरली डिपेंडेंट, है ना? तो अगर हम किसी इनफाइनाइट सेट को अगर हम लीनियरली डिपेंडेंट बोल रहे हैं, तो एवरी फाइनाइट सेट, सबसेट हम ले लें, अ, यहाँ पर आप लिखिए सबसेट एस of V is said to be linearly independent if every finite subset of S is linearly independent। तो अगर हर एक हमारे पास फाइनाइट अगर हम सबसेट ले लेते हैं S का, तो वो हमारे पास Li है, देन दैट इनफाइनाइट सेट विल बी Li, अदरवाइज इट इज LD, है ना, linearly dependent। Okay, let's write some results on the Li and LD vectors। So we just remember कि कौन सा सेट हमारे पास हमेशा LD होता है, कौन सा सेट हमेशा Li होता है। So remember these results। The empty the empty set is defined to be linearly independent। ठीक है, तो जो एम्प्टी सेट है वो डिफाइंड टू बी लिनियरली डिपेंडेंट, मतलब एम्प्टी सेट को हमेशा आपको लिनियरली इंडिपेंडेंट ही लेना है, दैट इज डिफाइंड, कि हम एम्प्टी सेट को Li बोलेंगे। ठीक है। दूसरा है अ सेट containing only the zero vector, set containing only the zero vector is LD। Okay, you can say only zero we have there is linearly dependent, linearly dependent। थर्ड रिजल्ट है, अगर हमारे पास सिंगलेटन कोई सेट है जिसके अंदर नॉन जीरो एलिमेंट है, देन दैट एलिमेंट विल बी दैट सेट विल बी कॉल्ड linearly independent। Okay, so containing a set containing only a non-zero vector is linearly independent। Linearly independent। Okay, two vectors or LD, a set containing only a non-zero vector is a linearly independent। Two vectors are LD, linearly dependent if and only if one is the scalar multiple of other, one of them is a scalar multiple of other। Number 5, a set which contains the null vector, जीरो उसके अंदर है, तो वो हमेशा LD होता है।
is linearly dependent. Every superset of a linearly dependent set linearly dependent every subset okay, so every subset of a linearly independent set is linearly independent if a vector v a linear combination of vectors v1 v2 up to vn, then this vector is including set, then the set in that we have this vector v1 v2 up to vn, तो ये हमारे पास ld बनेगा, इज लिनियरली डिपेंडेंट. ओके, तो ये रिजल्ट याद रखना है. एवरी सुपरसेट ऑफ अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट एंड एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. एंड इफ अ वेक्टर v इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सब वेक्टर्स v1 v2 अप टू vn, और वो वेक्टर जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी एक सेट के अंदर इंक्लूड है, देन दैट सेट विल बी लीनियरली डिपेंडेंट. if the set if the set this is v1 v2 up to vn is linearly independent and the set that is your v1 v2 up to vn and v is ld, then v is a linear combination the linear combination of the vectors v1 v2 up to vn. Okay, so the set of non-zero vectors that is your v1 v2 up to vn is ld if and only if one of the vectors
linear combination of the preceding vector. Okay, so ninth result, if the set v1 v2 and vn is li and the set v1 v2 and vn v is ld, है ना, उसमें अंदर अंदर हमने v को इंक्लूड कर दिया, then v definitely is the linear combination of the vectors v1 v2 and vn. The set of non-zero vectors v1, v2, and vn is LD if and only if one of the vectors vr, where r is positive, is a linear combination of the preceding vectors. तो अगर हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर्स पड़े हुए v1 v2 और सच दैट देन डेफिनेट और वो LD हैं, then definitely one of the vector is can be written as the linear combination of the preceding vectors. Okay, that exists definitely. Okay, so तो कैसे हम चेक करते हैं LI LD वेक्टर्स? सो बेसिकली हम रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके किसी भी वेक्टर को हम फाइंड करते हैं कि वो वेक्टर हमारे पास LI है या फिर LD। आइए एक सवाल कर लेते हैं, इक्वेशन साथ में कर लेते हैं। डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग वेक्टर्स आर linearly independent, linearly dependent or independent, So this is first is what, that is equals to 1 comma 2 comma 3, and that is equals to 0 comma 1 comma 2, and that is equals to minus 1 comma 4 comma 5. So that is equals to 1 comma 2 comma minus 3 comma 1, and this is 3 comma 7 comma 1 comma minus 2, and that is equals to 1 comma 3 comma 7 minus 4। ठीक, तो ये हमारे पास दो कुछ वेक्टर्स पड़े हुए हैं, इनमें देखना है कि कौन सा LD है, कौन से कलेक्शन LI है। सो कैसे हम करते हैं इनको, जरा देख लीजिए सवाल को। तो आपको क्या करना है, जो गिवन वेक्टर है इनको कॉलम्स में लिखना है। यू आर जस्ट कॉलम्स में लिखना है, मतलब जैसे फर्स्ट वेक्टर को कॉलम में लिखना है, तो दीज आर फर्स्ट वेक्टर v1, दिस इज v2 एंड दिस इज योर v3। तो इनको कॉलम्स में लिखना है एंड देन उसका हमें रैंक फाइंड करना है। और अगर रैंक नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, देन द वेक्टर्स आर you can say Li, otherwise they will be LD. So let's write in a proper way solution. So let's be consider, just write it, we consider a matrix A whose columns are given vectors। ओके, तो हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन हमने सीखा था, तो वी कैन अप्लाई हियर। वन जो ऑपरेशन होता है वो रैंक को अल्टर नहीं करता है, तो वी बेसिकली वांट रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। पहले तो मैट्रिक्स लिख लेते हैं, तो मैट्रिक्स विल बी व्हाट, दिस विल बी 1 2 3। तो हमने जो को फर्स्ट जो हमारे पास वेक्टर था उसको हमने कॉलम में लिख दिया, वी रिटन इन अ column, and then second will be also in the column and third will be also written in the column। आ जाओ भाई स्क्रीन।
ब्लैक स्क्रीन हो गई। अच्छा, तो दिस इज योर 1 2 3। यहाँ पर आपको 0 एंड दिस इज 1 2, और दिस इज -1, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ये हमने जो वेक्टर्स थे उनको कॉलम में आपको लिखना है, फिर इसकी आपको निकालनी है रैंक। तो हम जब ये ऑपरेशन लगाते हैं, दिस इज आर आई इज रिप्लेस विद आर आई प्लस के टाइम्स ऑफ आर जे, तो दिस ऑपरेशन विल नॉट अल्टर द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, है ना। और वी कैन से, वी कैन एनी एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो रैंक अल्टर नहीं होती। तो वी कैन जस्ट अप्लाई द रैंक एंड देन फाइंड द रो इक्विवेलेंट फॉर्म। रो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है? इफ यू वी हैव a non-zero element in the row, and then all the zeros below the that non-zero number are zero, and then in the second row the pivot position is right of the first one। ओके, सो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, दिस इज 1 0 -1, तो यहाँ पर जीरो करना है हमको क्योंकि वन नॉन जीरो नंबर मिल गया हमको, तो इसके नीचे हमें सारे जीरो चाहिए। तो यहाँ पर ऊपर फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड वाली रो से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यू विल हैव, आई एम जस्ट अप्लाइंग हियर, applying that is your R2 is replaced with R2 minus 2 times of R1, है ना। and then R3 is replaced with R3 minus 3 times of R1। so what you got from here, this is 2 minus 2 is 0, and 1 minus this will be 1, and this is 4 minus of 2, तो minus minus plus is 6 हो जाएगा। फिर this is 0, and this 2 minus this 2, and this is 5 minus 3, it will be plus of 8। क्लियर, तो यू विल गेट इन दिस वे। अब हमको क्या करना है, यू जस्ट से दिस इज योर 1 0 -1। यहाँ पर आप 0 1 6 दैट इज ओके। अब यहाँ पर 1 के नीचे 0 करना है तो आप अप्लाई कर दीजिए, आई एम जस्ट अप्लाइंग R3 रिप्लेस विद R3 एंड -2 टाइम्स ऑफ R2। ठीक, तो ये तो जीरो रहेगा, 2 - 2 इज जीरो हेयर, एंड 8 - 12 इट विल बी -4। सो यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर पिवोट पोजीशंस कितने हैं, दिस दिस एंड दिस। तो द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, अगर हम इसको ए कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए, इज योर ए, तो रैंक ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू 3, एंड 3 इज जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम बेसिकली ये बता रहे हैं कि कितने वेक्टर्स हैं वहां पर, है ना। जो जितने वेक्टर हैं उतनी भी रैंक आ रही है मैट्रिक्स की, तो वो हमारे पास दैट विल बी द, यू कैन से द दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, दे आर अलाइव। तो सो यू कैन जस्ट से सो द गिवन वेक्टर्स और अलाइव। ठीक है, सो आइए जरा सेकंड में आते हैं, सेकंड प्रॉब्लम में। तो उनके लिए भी हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट करते हैं, और सारे के सारे जो वेक्टर्स हैं उनको किस में लिखना है हमको, कॉलम्स में। तो यहाँ पर जैसे ये V1 फर्स्ट वेक्टर है, V2 सेकंड वेक्टर, दिस इज V3, वॉट एवर द टपल। जैसे यहाँ पर 4 टपल है, यहाँ पर 3 टपल था, इट डजेंट मैटर, बट एवरी वेक्टर यू विल हैव टू राइट इन अ कॉलम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 - 3 1, एंड 3 7 1 - 2, 3 7 1 3 7 -4। तो इसको हम रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, कैन जस्ट राइट इन अ कॉलम। सो ये हमारे पास जो आएगा, दैट विल बी ऑफ 1 2 - 3 1। तो फर्स्ट हमने लिख दिया, एंड देन 3 7 1 - 2 सेकेंड लिख दिया, एंड दिस इज 1 3 7 एंड -4। अब इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ 4/3 ऑर्डर, सो लेट्स कन्वर्ट इन दिस। तो आपको क्या करना है, 1 3 1, और फिर आपको अप्लाई करना है बारी 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 से। तो R2 इज रिप्लेस विद R2 -2 टाइम्स ऑफ R1, एंड R3 इज रिप्लेस विद R3 माइनस प्लस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ R1,
and this is R4 replaced with R4 and माइनस सिंपली R1। तो यहाँ पर आ जाएगा, टू से मल्टीप्लाई करके घटाना है तो दिस इज जीरो, एंड थ्री टू ज सिक्स तो इट विल बी वन, एंड दिस इज थ्री माइनस टू, इट विल बी वन। टू हमें फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करना था, फिर हमें थ्री मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो थ्री माइनस थ्री इट विल बी जीरो, एंड थ्री थ्री ज नाइन, नाइन वन इज टेन, and three is six, and then you have फिर वन माइनस वन इज जीरो, माइनस टू माइनस थ्री इज माइनस फाइव, एंड माइनस फोर एंड माइनस थ्री, माइनस नहीं, हाँ सब्ट्रैक्ट करना है ना, माइनस फोर और माइनस थ्री इज माइनस सेवन। तो ये हमारे पास विल बी, नो नो नो, ये सिंपली क्या बोलते हैं, यहाँ पर माइनस का फाइव आ जाएगा, तो it will be क्योंकि माइनस फोर एंड माइनस वन, तो इट विल बी माइनस फाइव। क्लियर। अब हमारे पास क्या करेंगे, जस्ट हैव, अब अप्लाई करिए यहाँ पर, ये वाला जो है वो जीरो हो सकता है, एंड तो यू जस्ट अप्लाई हियर। यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस इज थ्री, एंड थ्री मल्टीप्लाई करके प्लस का टेन हो जाएगा, सिक्स नहीं होगा, तो वी हैव टेन हियर। ओके, तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि जस्ट हैव, दिस इज आर थ्री is replaced with R3 minus 10 times of R2, and R4 is replaced with R4 minus, no, plus of 5 times of R2। Okay, so 1 3 1, that is okay, 0 1 1, that is also okay, and this is 0 0 0 क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करके घटाया है, और यहाँ पर ऐड करेंगे तो 0 0 0। तो ये तुम्हारे पास यू कैन इजीली सी कि यहाँ पर हमारे पास जो प्योर पोजीशन है दैट इज टू, तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज टू, और नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने थे, थ्री, विच इज अ लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स या वेक्टर्स यू कैन से। सो दिस implies these vectors are LD, so you can just say, so the given vectors are LD। क्लियर। तो आपको क्या करना है कि अगर हमारे पास कुछ वेक्टर्स गिवन है, उन्होंने चेक करना है कि वो वेक्टर्स एल आई हैं या फिर एल डी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको उन वेक्टर्स को कॉलम्स में लिखना है। ठीक, और फिर जो मैट्रिक्स बनी उसकी आपको रैंक कैलकुलेट करना है, और रैंक जब हमारे पास निकल आएगी, तो अगर रैंक उन नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल है, देन दैट वेक्टर्स आर एल आई, linearly independent। अगर रैंक इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ वेक्टर्स, then in that case the the vectors are LD। okay, तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, और आप ऐसे चीजों को करेंगे, और भी आप एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करिएगा, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम रो रैंक एंड कॉलम रैंक की बात करेंगे, वो क्या होता है, एंड देन वी टॉक अबाउट सम इक्विवेलेंट मैट्रिसेस एंड ऑल, और ढेर सारे हम रिजल्ट्स पढ़ेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के ऊपर। ओके, सो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।